Hey guys, thank you for tuning in again. Now this build is actually the most epic build that we have done for now. It has 4x 3090, 3960x 333, 256 GB of RAM, 8 terabyte of M.2 storage. So stay tuned, watch till the end. By the way, did I miss saying it's all liquid cooled? So yeah, behind me is that build. It's an amazing build just for the fact that ये ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है दुनिया में, देश छोड़ो दुनिया में. It's one of a kind, all liquid cooled. Huge shout out to everybody involved in this. Gigabyte for the board and our Zotac guys for the graphic cards. क्योंकि 43090 एक साथ लेना ये बिल्ड के लिए आसान नहीं था. बहुत वी रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ पीपल इन द एंड. Zotac really helped us out, मतलब एकदम विंग करके दिला दिए कार्ड चारों. ऑल्सो ये बिल्ड डिले भी हुआ, रीवर्क भी हुए इसमें, थोड़ा बहुत मॉडिंग करना पड़ा. आई गेट इनटू द डिटेल्स वेरी क्विकली 1 2 3 4 करके. सो नंबर 1 सबसे बड़ा प्रॉब्लम था केस चॉइस, कि हम सोच रहे थे क्या केस लेंगे. क्यों हर कोई केस पॉसिबल ही नहीं करता कि आपको 43090 बिठाओ उसमें. नंबर 1 सबसे बड़ा दिक्कत है कि 8 PCI स्लॉट वाले केस ही कम होते हैं. तो वी सेटल डाउन ऑन 1000D आफ्टर अ लॉट ऑफ विचार विमर्श. हम लोग सेटल डाउन कर गए उसके ऊपर. थोड़ा बहुत मॉडिंग करना पड़ा. वी हैड टू कट अ स्लॉट ओपन, अ न्यू स्लॉट ओपन एंड ड्रिल अ फ्यू होल्स टू गेट द फोर्थ ग्राफिक कार्ड स्लॉटेड इन. वो थोड़ा बहुत मॉडिंग होगा. इफ़ यू सी द शॉर्ट्स इन द वीडियो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि ये मॉड हुआ कहाँ है. सो या थोड़ा सा क्लीन वर्क है उधर. प्रॉब्लम नंबर 2 सबसे बड़ा ये था कि हाउ डू वी पावर 43090s. क्योंकि एज यू ऑल नो 3090 इज़ अ पावर हॉग. कंबाइन दैट विथ 3960X 333 वो नहीं होने वाला था. सो द वर्क अराउंड या द सोल्यूशन दैट वी एंडेड अप डूइंग वॉज एंटेक का एक ज़बरदस्त पावर सप्लाई है, सिग्नेचर सीरीज 1300 वाट. नाउ उसमें एक यूनिक फीचर है, यू कैन कनेक्ट 2 सप्लाईज टुगेदर विद एन OC लिंक केबल which makes them work as a single supply. So 2 graphic cards go in one supply, motherboard and 2 graphic cards go in another supply. इससे हम कर रहे हैं. Now the biggest question after hearing this is कि वो 2 पावर सप्लाई हमने फिट कैसे किए 1000D में. इसको भी हमने मॉड किया और काफ़ी क्लीनली मॉड किया. पता नहीं चल रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू सी वेयर द सेकंड पावर सप्लाई इज फिटेड, क्योंकि 1000D इज सच एन अमेजिंग केस. नाउ ये सब पार्ट्स की बात हो गई. नाउ द चैलेंज वॉज हाउ डू वी लिक्विड कूल दिस थिंग. सो उसमें भी एक्चुअली थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग है इसमें. वी हैव 2 480mm कूलर्स, सॉरी रेडिएटर्स, 2 480mm रेडिएटर्स just for the 43090s. So that's a 960mm radiator. That radiator has been made to act like one. उसका connection वैसे कर दिया है. Maybe you'll see that in the video as well. Now the 360mm radiator is cooling the CPU only. So cooler radiator की बात कर रहे हैं हम लोग. Now the next thing was हम जब इसका loop बना रहे थे, we realized a little late in the process कि we will not be able to connect the graphic card by fittings. तब हमने लास्ट मिनट EKWB को कांटेक्ट करके उसका फ्रंट ब्लॉक मंगाया, विच कनेक्ट्स ऑल ऑफ देम 4 टुगेदर एंड इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल यूनिट टू डिस्पर्स द पानी, वाटर, कूलेंट. तो ये हो गई थी लूपिंग की बात. नाउ सिंस वी ऑल लूप्ड इट अप एंड चल रहा है फाइनली. डिटेक्शन में थोड़े इश्यूज हुए थे. वी वर नॉट गेटिंग डिटेक्शन ऑन 1 SSD, देन वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट द 4th ग्राफिक कार्ड. So we got in touch with Gigabyte since they manufacture the motherboard. We got a new BIOS out very soon. Thanks to them, जल्दी मिल गया, वो नया BIOS आ गया and we managed to get all of it working. मज़ा आ गया. Now coming to the cooling part. अब लोग water cool करते हैं, उसमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए. And believe me, we are surprised looking at the temps on this machine. In an ambient temperature room of 24-23 degrees. इसका ग्राफिक कार्ड का आइडल टेम्परेचर इज़ नॉट क्रॉसिंग 26 डिग्री सेंटीग्रेड. कैन यू बिलीव दैट 3090 ऑन आइडल इज़ 26 डिग्रीज. कमिंग टू ऑन लोड द 3090 इज़ नॉट क्रॉसिंग इवन 50 डिग्रीज. 53 डिग्री से ऊपर गया ही नहीं अभी तक ये. सो 3090 लिक्विड कूल्ड में 53 डिग्रीज, आई मीन दैट इज़ माइंड ब्लोइंग. आई मीन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आई एम नॉट एबल टू शो, क्योंकि ये एक लंबा सा प्रोसेस था और हम इसमें काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी मज़ा भी आया. सो येस, ये हो गई इसकी कूलिंग के बाद. CPU अगेन ऑन लोड इट्स नॉट क्रॉसिंग 80 डिग्रीज, बट कीप इन माइंड दैट्स a Threadripper 3. तो इवन 80 डिग्रीज भी मतलब अच्छा खासा है, बट अगेन लिक्विड कूल भी है. सो होप यू लाइक्ड वॉचिंग द वीडियो.
It's almost one of a kind in India. And yeah, do like, share, and subscribe. And in the comments, ask us the questions that you need answered regarding this build or some other build or some build that you're intending to purchase. We'll gladly help you out. Do share, do like, and do subscribe. I don't think this has been done in India up until now for sure. So yeah, a like would be really appreciated. Thank you for watching. ठीक है ओके It's all here, bro. All the scripts here, man. You just watch, bro. You just watch it. A few moments later. Again, for the second part of the epicest build we epicked. Shit, no. That is why you should script your videos.